Because our today's topic of botany is abscisic acid. And so far as in these topics we are concerned, we have deal growth regulators and growth inhibitors. We conclude the growth plant growth regulators, including auxins, gibberellins, and ethylene. Today our topic is abscisic acid, which is a growth inhibitor. Abscisic acid with the progression in the research on plant growth regulators, three independent researchers reported the purification and chemical characterization of three different kinds of inhibitors during 1960. Inhibitor B, F6 and Dormin. Later, three were proved to be chemically identical in nature and were named as abscisic acid ABA. जैसे कि आप जानते हैं कि साइंटिस्टों ने 1960 में तीन ग्रोथ इनहिबिटर्स को डिस्कवर किया है, जिनमें ग्रोथ इनहिबिटर बी, एप्सिसेकंड एंड डोरमिन. तो लेटर ऑन जब उनकी केमिकल एनालिसिस हो चुकी है तो उन पर देखा गया है कि तीनों में तीनों की जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है, यानी वो तीनों एब्सिक एसिड कंपोजिट हैं. So far as the abscisic acid is concerned, it is slightly acidic growth hormone that functions as a growth inhibitor by interacting with other mentioned growth hormones, that is auxin, gibberellins, and cytokinins. Thus, unlike other plant growth regulators, abscisic acid also has a wide range of effects on growth and development of plants. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो ग्रोथ इनहिबिटर होता है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होता है. तो इस तरह से जो एब्सिक एसिड है इसमें ये चीज़ें पाई गई हैं कि ये अफेक्ट करता है प्लांट की जो ग्रोथ है या उसकी डेवलपमेंट है, इस पर इसका एक वाइड रेंज इफेक्ट होता है. तो इसीलिए इसको हम ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं. As its production is stimulated under stress, unfavorable conditions such as drought, water lodging, excessive temperature, etc. Thus it is known as stress हार्मोन. जैसे कि आप जानते हैं तो उसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका जो असर है ये ग्रोथ इनहिबिटर है. It acts antagonistically to gibberellic acid, and this hormone is transported to all parts of the plants through the process of diffusion by conductive channels. तो जिस हार्मोन को हमने देखा है कि इसके जो इफेक्ट्स हैं, यानी वो इफेक्ट्स अगेंस्ट होते हैं जिबरलिक एसिड जिबरलिन्स के. तो इस तरह से ये एब्सिक एसिड है ये ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी ग्रोथ और इसकी प्लांट की डेवलपमेंट पर इसका एक बड़ा असर रहता है. Functions of abscisic acid shows the various important physiological functions. Number one, it has a primary role in regulating abscission and dormancy. जैसा कि आप जानते हैं कि जो abscission है, इन जैसे फ्रूट्स और लीव्स ख़त्म होते हैं, तो इसमें इसका रोल होता है कि प्लांट के जो लीव्स हैं फ्रूट्स हैं वो अर्ली फॉल होते हैं. एंड डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, इसके अलावा जो डॉर्मेंसी होती है सीड्स की या बर्ड्स की, इस पर भी इसका रोल है कि यानी ग्रोथ इनहिबिटर है. बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी हेल्प द सीड्स टू विथस्टैंड द डिसीशन अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू अनफेवरेबल ग्रोथ. इस तरह से ये अनफेवरेबल ग्रोथ के लिए मौजूद है, यानी प्लांट की ग्रोथ पर इसका मनफी असर रहता है. इट एक्ट्स एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड ऑल्सो इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म. दूसरा इसका रोल है कि मेटाबॉलिज्म प्लांट होता है इसको इनहिबिट करता है. इट हैज़ इट्स रोल इन इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन. जो सीड जर्मिनेशन है इसको भी इनहिबिट करता है. इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन. तो इसके अलावा सीड डेवलपमेंट और मेचुरेशन ऑफ प्लांट जो होती है या फ्रूट मेचुरेशन होते हैं, इसका पर भी इसका नेगेटिव असर होता है. एब्सिक एसिड स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. जो स्टोमेटा होता है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, इसको ये क्लोज करता है. अगर प्लांट में ज़्यादा इसकी एक्सेस होती है तो स्टोमेटा क्लोज होता है और प्लांट पर इसका नेगेटिव असर रहता है. एब्सिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज डोरमिन. डोरमिन एज प्रोमोट सेवरल काइंड्स ऑफ डोरमेंसी. तो इसको हम डोरमिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डोरमेंसी को स्टिमुलेट करता है, यानी डोरमेंसी प्लांट्स में ये रिस्पॉन्सिबल होता है. इसलिए इसको हम ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं क्योंकि इसके इफेक्ट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट प्लांट के ग्रोथ पर नेगेटिव ही होते हैं, यानी मनफी असरात इस पर होते हैं. तो हम उसको ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं कि ये एब्सेंट करता है, यानी डॉर्मेंसी में ज़्यादा हम इसी तरह से अनफेवरेबल ग्रोथ इसकी होती है, इससे होती है. सीड जर्मिनेशन इनहिबिट होती है, इसी तरह से मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होता है. या क्लोजर ऑफ स्टोमेटा जब इसकी एक्सेस होती है तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा भी होती है. तो इसलिए हम उसको डॉर्मिन कहते हैं, यानी ये डॉर्मेंसी ऑफ प्लांट्स में प्लांट रोल अदा करता है. तो इसलिए हम समझते हैं कि ये ग्रोथ इनहिबिटर है. The mechanism of stomata closing by abscisic acid. Abscisic acid binds to the receptors of the plasma membrane at the surface of the gout cells.
The receptors in turn activate several interconnected pathways which causes the rise in pH in the cytosol, promoting the transfer of calcium from the vacuole to the systole. All and this causes cytomata to close, and opening of cytomata occurs when conditions are just reversed to it. Interaction between growth regulators. For the regulation of every phase of growth, for differentiation and developmental process, two or more phytochromosomes are intimately related to each other. These can either act as synergistically or antagonistically. Thus, every plant growth regulator has one or the other role to play. Likewise, there are also a number of events in the life of a plant where more than one plant growth regulator is also involved to affect the particular event to take place. For example, dormancy of seeds and buds is mostly due to abscisic acid, while it is broken down by gibberellins. Auxin and cytokines act antagonistically in controlling apical dominance. Auxin causes apical dominance, while cytokines help to overcome them. Synthesis is prevented by both auxin and cytokines, while stimulation is done by abscisic acid. Auxin and cytokines act as synergistic in promoting cell division. Therefore जो abscisic acid है इसका नेगेटिव रोल होता है, इसलिए हम उसको ग्रोथ